हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ का लेसन 9 द ब्रिजिंग द डिस्टेंस पढ़ेंगे। ओके, लास्ट टाइम हमने प्रेरीज के बारे में, द ग्रासलैंड प्रेरीज के बारे में चैप्टर कंप्लीट किया था और उसकी एक्सरसाइज की थी। अब आप बच्चों ने ये रीडिंग, आज हम रीडिंग करेंगे और कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आपका ये सिलेबस में है लेसन, तो हमने ये भी कंप्लीट करना है और इसकी एक्सरसाइज भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छे से इस चीज़ को समझना है, आंसर्स लर्न करने हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। और अभी लेसन आप पढ़ेंगे, समझो उसको ध्यान से। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के लिए, तो आपने करना है अच्छे से। ओके, ब्रिजिंग द डिस्टेंस। इन एशियन टाइम्स men had no means of traveling। इसका क्या मतलब हुआ? एशियन टाइम्स में, ओल्ड टाइम्स में लोगों के पास ट्रैवलिंग का कोई मीन्स नहीं था, कोई मोड नहीं था ट्रैवलिंग का। ही यूज टू ट्रैवल ऑन फुट, मतलब दे यूज टू वॉक। कितना भी दूर डिस्टेंस हो, दे यूज टू वॉक, वो चल के जाते थे कहीं भी। ही कैरिड हिज गुड्स ऑन हिज बैक और हेड और ड्रैग्ड इट अलोंग द ग्राउंड। ही यूज हो रहा है मैन के लिए। ओके, ही कैरिड हिज गुड ऑन हिज बैक और हेड। वो अपना जो सामान था वो या तो अपने बैक पे लेके जाते, या तो हेड पे ऊपर रखते, या ड्रैग करते, खींच के लेके जाते अपने साथ ग्राउंड पे जैसे खींचते हैं सामान को। टू मेक इट ईजी, उस चीज़ को ईजी बनाने के लिए ही मेड स्लेजेस एंड पुल्ड देम हिमसेल्फ, बट it was still a difficult task. Later, he began to domesticate the animals like dogs, horses, camels, etc. फिर क्या हुआ? कुछ टाइम बाद उन्होंने एनिमल्स को सपोर्ट लिया। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक जैसे डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं, कैमल्स हैं, तो उनको सपोर्ट लेके ऐसे जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, मैन विद बुलक कार्ट, तो यहाँ पे सामान रख के वो फिर एनिमल्स पे जाते थे। ही बिगैन टू यूज देम टू कैरी हिज लोड, उनका जितना भी लोड था, उनके पास सामान होता था, वो एनिमल कैरी करते थे। ही ट्रेन्ड देम टू पुल द स्लेजेस एंड कार्ट्स, एनिमल्स को ट्रेन भी किया जाता था कि कैसे उनको सामान लेके जाना है। ही बिल्ट राफ्ट्स टू क्रॉस द रिवर, बट it was the invention of wheel which brought a revolution in transport system। किस चीज़ का इन्वेंशन था? व्हील का। व्हील से ही सब चलता है ना, सारे व्हीकल्स व्हील पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो व्हील के इन्वेंशन से सब कुछ एकदम चेंज हो गया। रेवोल्यूशन, बॉट अ रेवोल्यूशन इन कौन सी सिस्टम में? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। द wheel was probably invented in Mesopotamia, Iraq, about 3500 BC। Probably मतलब शायद, probably का मतलब होता है शायद। It invented in Mesopotamia, जो इराक में है, in 3500 BC, बहुत पहले। The 18th century was the period of industrial revolution in Europe। Industries had a demand of raw materials and supply of finished good to other parts of the country. The raw materials had to be carried to factories from distant places, and the finished goods had to be distributed to different parts of the world. So, the demand of cheap and sufficient means of transport began to increase. A good point about man is that he never been satisfied with his achievements. Another revolutionary success came into his way when he invented the steam engine। फिर उसके बाद क्या हुआ? व्हील बना, फिर रॉ मटेरियल्स हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, फिर रॉ मटेरियल सप्लाई हुए, फिर फिनिश्ड गुड्स जो भी मतलब होता था। फिर भी मैन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने क्या इन्वेंट करा? स्टीम इंजन। द स्टीम इंजन वॉज डिजाइन्ड बाय जेम्स वॉट इन इंग्लैंड। दिस इंट्रोड्यूस्ड एन एरा ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट
in the world. इससे क्या हुआ? फास्ट ट्रांसपोर्ट आया दुनिया में. The steam engine were being fitted in trains, cars, ships which ran on coal. जो कोल पे चलती थी, पहले कोल पे चलती थी सारी ट्रेन्स, कार्स, शिप्स. This made them powerful, quick and able to carry heavy loads. इससे क्या हुआ? उनमें पावर आ गई सारे व्हीकल्स में, वो जल्दी उनकी स्पीड बढ़ गई और हैवी लोड्स जो होते थे वो कैरी कर पाते थे. Gradually, steam engines were replaced by petrol, diesel and electrical engines. फिर कुछ टाइम बाद स्टीम इंजन्स भी रिप्लेस हो गए पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन से, विच आर स्टिल इन यूज. आपको भी पता है जो आज तक की डेट में यूज होते हैं. हमारे व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलते हैं. टुडे वी हैव मेनी मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज एरोप्लेन, जेट, ट्रेन, बस, कार, शिप्स. ये सारे आज की डेट में जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है, लग्जरी ट्रांसपोर्ट्स हैं, वो भी हैं. Smooth roads were constructed and railway lines were laid to make the modern vehicle run fast. फिर स्मूथ रोड्स आई, फिर अच्छे अच्छे रेलवे ट्रैक्स बने, रेलवे लाइंस आई. Today we have a large network of roads and rails which is spread all over the world. जो पूरे दुनिया में स्प्रेड है. लार्ज नेटवर्क है रोड एंड रेलवे का. आपको पता है रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे. रोडवेज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट. रोडवेज सबसे पुराना सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का. अर्लियर द रोड्स वर नैरो एंड रफ. टुडे वी हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. कच्चा एंड पक्का बोथ टाइप ऑफ रोड्स आर फाउंड इन आवर कंट्री. कच्चा एंड पक्का रोड्स मतलब पक्का रोड्स तो होते हैं जो एकदम स्मूथ रोड्स होती हैं, जहाँ पे हमें हम अपने जो भी व्हीकल हैं वो एकदम स्पीड से स्मूथली लेके जा सकते हैं. कच्चा रोड होती हैं जहाँ पे थोड़े बहुत, जो कच्ची रोड होती हैं जहाँ पे थोड़े बम्प्स होते हैं, थोड़े अच्छे से रोड कंस्ट्रक्टेड नहीं होती. हाईवेज, रोड्स लेड फॉर हेवी ऑटोमोबाइल्स ट्रैफिक आर कॉल्ड मोटरवेज. दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाईवेज. जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, हैवी ऑटोमोबाइल ट्रैफिक होता है, जैसे ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, तो उनको बोलते हैं मोटरवेज. दे आर ऑल्सो नोन एज हाईवे, फ्रीवे और एक्सप्रेसवे. दीज रोड्स कनेक्ट बिग सिटीज एंड आर डिवाइडेड इनटू 4 or more ट्रैफिक लेन्स. अब जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये हाईवे होता है, ये आपको पता है, आप भी गए होंगे हाईवे से. तो जैसे हैवी ट्रैफिक, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं और जो कार्स होती हैं, जो इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, और बिग बिग सिटीज़ में ये सारी रोड्स कनेक्टेड होती हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, तो इसको बोला जाता है हाईवे. तो These roads connect big cities and are divided into 4 or more traffic lanes meant for traffic moving in the opposite direction. अब जैसे आप देखते हैं, एक रोड इधर जा रही है और एक रोड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है. Special lanes are provided on these roads for vehicle to take turn. Drivers cannot stop or take turn as they wish on these highways. इस हाईवे में, इन हाईवेज में आप अपनी मर्जी से कोई भी टर्न या नहीं ले सकते. अगर आपने यू टर्न लेना है, वापस जाना है, तो भी आपने ट्रैफिक रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे. जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है यू टर्न लेने का या रोड चेंज करने का या जो भी आप करना चाहते हैं, वो आपने अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. आप जब आपको वहाँ पे जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा, जहाँ पे प्रोविज़न दिया होता है. Some of the famous highway of the world are, ये famous highways हैं world के, वो हम पढ़ेंगे. The Pan American Highway, it connects Alaska in North America to Chile in South America. It also links the capital of 17 Latin American countries and east-west coasts of South America. The Trans-Canadian Highway,
It runs across Canada, starting from the Pacific Ocean in the west to the Atlantic Ocean in the east. The Burma-China Road. It was built in 1937 and 1938. It runs from Kunming in China to Lashio in Burma, Myanmar. It covers a distance of about 1100 kilometers. The Australian Transcontinental Highway. It runs from the north of Australia to the south of Australia. At present, we have similar superfast highways in many parts of India. इंडिया में भी ऐसी superfast highways हैं. Indian roadways. It has one of the largest network of road in the world. It is connected with all neighboring countries by road and even beyond. It has a vast network of roads, about 3.32 million kilometers. The Sher Shah Suri Marg, formerly known as Grand Trunk Road, runs between Kolkata in India and Peshawar in Pakistan. The Indo-Tibet Road links India with China through Tibet. There is another road that runs through Sikkim to Lhasa, the capital of Tibet. इसमें बताया गया है कि इंडिया में भी, इंडिया से कनेक्ट होते हुए भी ऐसे कई रोड हैं जो आपको बहुत अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ तक भी कनेक्ट कर देता है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा. The first highway is planned to be built between Ahmedabad and Vadodara. The construction of new highway and roads has created a major cause of environmental pollution. The automobiles emit smoke and dirt and cause air pollution. Air pollution इन्हीं सब चीज़ों से होता है, व्हीकल से ही होता है. They are also responsible for growing number of road accidents. रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं हाईवेज पे काफ़ी, स्पीड बिकॉज ज़्यादा होती है सबकी. एयर पोल्यूशन इज़ डेंजरस नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो. ये एयर पोल्यूशन सिर्फ ना ही ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम है, बट एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी ये डेंजरस है. It also reduce crop yield and may cause many diseases as bronchitis and lung cancer. इससे एयर पोल्यूशन से बहुत डेंजरस डिजीजेस भी होने के चांसेस होते हैं. Railways are very useful to us. It is cheap means of public transport. Every day, a large number of trains runs along railway tracks throughout the world. They carry thousands of people and heavy goods from one place to another. They play an important role in the growth and development of the industries in many parts of the world. Railways कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए और सबसे ज़्यादा चीप मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट माना जाता है. और एवरी डे बहुत सारी मतलब ट्रेन्स रन होती हैं रेलवे ट्रैक पे पूरे वर्ल्ड में. दे कैरी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड हैवी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. ये इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. काफ़ी लेंदी चैप्टर है, अब ध्यान से इसको पढ़ना. The first public railway began in England between 1820s and 1830s. The first railway line in India was constructed by British Governor General Lord Dalhousie in 1853 between Mumbai and Thane. Thane भी महाराष्ट्र में ही एक जगह है. It had distance of merely 30 kilometers. Today, the Indian Railway is the Asia's largest and the world's fourth largest railway system. Indian Railway. The total length of railway in India is over 70,000 kilometers.
It employs about 1.5 million people. The number of trains which run every day is around 11,000. The Indian Railways has more than 7,000 stations. The Indian Railway network is divided into 15 zones. इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो 15 जोन्स में डिवाइडेड है, such as Southern Railway, the Northern, the Eastern, and so on. Some of the Indian trains are noted for their fast speed, such as Rajdhani Express, Shatabdi Express, the Taj Express, and the Pink City Express. पिंक सिटी आपको पता है किसको कहते हैं? जयपुर को. There are train services to Lahore in Pakistan, Dhaka in Bangladesh from India. Today, every country has a good network of railways. Europe and North America have the most dense network of railways. Belgium has the greatest railway density in Europe. In Japan, railway are most important means of transport. ये सारा important है, आपने पढ़ना है. The Shinkansen is the fast railway network in Japan. Japanese railway are mainly electrical and noted for their speed. जापान में जितने भी रेलवेज हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल हैं और उनकी वो स्पीड के लिए जाने जाते हैं. The Japanese bullet trains run on specially built tracks at a speed of 300 km per hour. Similarly, France is also famous for its high-speed trains called the TGV. The TGV created a world record by traveling at a speed of 515 km per hour. In the United States of America and Canada, the railways join cities located on the Pacific in the west with those situated on the Atlantic in the east. It takes 4-5 days to cover this distance. Similarly, the Grand Orient Express connects Paris with Istanbul in Turkey. हाईवेज पढ़ा, रेलवेज पढ़ा, अब पढ़ेंगे वाटरवेज. The history of waterways was started during the prehistoric times. Rafts and canoes were the earliest vessels. The early man built rafts and canoes to travel on the rivers. Logs were tied up with ropes and used for travel. All the early craft were propelled by paddle or poles using the muscular power. Then wooden ships were made which rowed with oars. Later, early man learned to use wind power through the use of masts on his boat or ship. It made sailing easier. An important change came in the history of waterways with the introduction of steam engine on big ships. Nearly all ships and many boats are powered by engines. फिर कुछ टाइम बाद सारी boats और ships engine में convert हो गए. Later, diesel engine were used. Ships were built of iron and steel instead of wood. Today, ships are powered by turbine and internal combustion engines. They travel at a great speed. Water transport can be divided into two kinds: inland waterways and ocean waterways. Inland waterways. Many big rivers and lakes are used as waterways. As Ganga and Brahmaputra, similarly, the lagoons of Kerala are used for navigation and transportation.
Inland waterways are the best developed in Europe and North America. Ocean transport. Ocean transport is the cheapest but slowest mode of transport. The important sea routes are the North Atlantic route, the Cape of Good Hope route, and Mediterranean Suez. Asiatic route and the Panama Canal West Indian Central American route. The ocean routes have promoted international trade in raw materials like cotton, rubber, jute, wool, and tobacco. They are also used to carry food grains and mineral ores. Now, dairy products, meat, and fish are also transported by refrigerated ships. Refrigerated ships भी होती हैं. Petroleum is carried by special ships called tankers. The construction of canals like Suez and Panama greatly increased the usefulness of ocean routes. The Suez Canal. The Suez Canal was opened in 1869 for passenger and cargo ships. It links the ports of Suez on the Red Sea with ports of Mediterranean Sea. It joins the two seas and is about 17 kilometers long and 150 meters wide. It has shortened the distance between Mumbai and London by 9,700 kilometers. There was a time when ships took about 6 months to travel the distance of Mumbai to London. Now they cover it in just 2 weeks. पहले बहुत टाइम लगता था डिस्टेंस ट्रैवल करने में, अब इट्स मतलब अब बिल्कुल भी बिग डील नहीं रही वो, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ये सब वाटरवेज, रोडवेज और सबका इन्वेंशन होने के बाद. द पनामा कैनल. द पनामा कैनल केम इनटू ऑपरेशन इन 1914. It connects the Pacific Ocean with the Atlantic Ocean. It is 80 kilometers long. It is called the Gateway of the Pacific. It connects the country on the Pacific Ocean to countries on the Atlantic Ocean. Earlier, ships had to go around the stormy Cape Horn in South America. Now, they take just 8 hours to travel through the canal. The canals and seaways have increased trade between continents. The North Atlantic Ocean is the busiest in the sea transport. Our country has a coastline of over 6,000 kilometers. There are 12 major ports and 139 minor working ports. The important ports of India are Mumbai, Kolkata, Chennai, Cochin, Visakhapatnam, Kandla, Tuticorin, Paradeep, and Marmagao. Mumbai is the biggest and the busiest seaport in India. Airways. Airways is the fastest and the costliest means of transport. Aeroplanes fly at a speed of 800 to 1000 km per hour. Aeroplanes were invented by Wright brothers. Orville Wright and Wilbur Wright in 1903. The first regular air service came into operation between London and Paris in 1919. The countries which started air services first of all were Britain, France, and the USA. But after the Second World War, a large number of air services came into operation. At present, almost all the countries are connected with each other through airways. A large number of people fly daily to other cities and countries in connection of business and trade. It is an interesting fact that more and more people are now traveling by air to other countries. London, Paris, Moscow, Tokyo, New York have big international airports.
The world's busiest airport is the Heathrow Airport in London, while the greatest rush of air traffic is found in the USA. The important airports in India are the Indira Gandhi International Airport, Delhi, Sahara International Airport, Mumbai, Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata, Meenam Bakam International Airport, Chennai, Rajasthani International Airport, Amritsar, Thiruvananthapuram Airport in Kerala. ये इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में. Some major airlines of the world: Canada, Air Canada; Britain, British Airways; France, Air France; India, Air India; Australia, Qantas; Germany, Lufthansa; Italy, Alitalia; Russia, Aeroflot; Japan, Japan Airlines; Singapore, Singapore Airlines; Pakistan, Pakistan International Airlines; Netherlands, KLM; Royal Dutch Airlines; Thailand, the Thai Airways; USA, United Airlines; Transworld Airlines; Pan American Airlines; Eastern Airlines. In India, Indian Airlines, now called National Aviation Company of India, provide air services within the country. It also operates its flights to nearby countries. Air India provides international services to many countries. Deccan Airways, Sahara Airways, and Jetline Airways are important private airlines in India. Okay, ये हमने लेसन रीड किया पूरा. अब इसके रिलेटेड एक्सरसाइज हम करेंगे. लेंथी चैप्टर है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपने इसको अच्छे से करना है. रीडिंग समझना है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप कल तक कर लेना, तो फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा. ओके, थैंक यू.